Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hi. Assalamualaikum. Nice car. Okay, thank you so much. Oh no cell phone, no cell phone. क्यों? Cell phone से मधुमक्खियां मर जाती। मधु? बीज. Cell phone के सिग्नल से मधुमक्खियां अपने घर का रास्ता भूल जाती और मर जाती। They die. ये अच्छा नहीं, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने apparently कहा है Apparently कि अगर दुनिया की सारी मधुमक्खियां मर गई तो उसके ठीक 4 साल बाद सारे आदमी मर जाएंगे। That's right. That's right. सारे आदमी मर जाएंगे। सारे आदमी मर जाएंगे। Hey, see sparrow, chimney, or why you putting it on? Oops, just next. और ये विश्व भर में जहाँ कहीं भी किसी इमारत में दरार देखते हैं वहां जाकर के अपना घोंसला बनाते हैं। और एक दर्द की बात है सर, जब से ये मोबाइल के टावर्स आए हैं इनकी संख्या गिनी चुनी रह गई है। क्यों? कि वो मर रही है सर फटाफट। कहाँ छीन आप लोगों को? जी उनकी आवाज ही बंद हो गई है मोबाइल की वजह से। जी तो मैं आपने जो मेंशन किया था मोबाइल फोन के यूज से जो थर्मल इफेक्ट है, मैं उसकी बात करूं जो हम लोग आज की डेट में देख रहे हैं। मैं अपने यंग इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हूँ। आज की डेट में मेल इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम 40% है। अगर हमारे पास में इनफर्टाइल कपल आता है 40% केसेस में मेल पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल एंड देयर आर वेरियस प्रूवन स्टडीज विद द कांस्टेंट यूज ऑफ मोबाइल फोन आपका स्पर्म काउंट ड्रॉप करता है, उसकी क्वालिटी ड्रॉप करती है एंड जो उसकी फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी ड्रॉप करती है एंड दिस हैज बीन प्रूवन बाय वेरियस स्टडीज। इन लोगों को उसके बारे में स्टडीज बताइए। सारी स्टडीज है, आप लोग ये ग्लोबल स्टडीज आप लोग सर्च कर सकते हैं डाल के। डॉक्टर डेविड डेविस के वेबसाइट में भी हैं। Yeah, various studies and which is proven कि this is और दूसरी बात है कि लास्ट सितंबर वाज द मंथ फॉर अवेयरनेस ऑफ पीसीओएस एंड पीसीओडी। अपने जो लेडीज हैं जो जीन्स में यहाँ रखते हैं, बैक पॉकेट में रखते हैं और फोन ऑन रहता है, उससे there has been an exponential increase in Bombay of PCOS and PCOD, that is called polycystic ovarian disease. This is only to create awareness to you all. जी मैं आपकी बात से सहमत हूँ क्योंकि मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में सब चीजें देख रही हूँ। आई डोंट हैव एनी स्टडीज टू प्रूव माय सेल्फ, बट हम लोग देख रहे हैं कि स्पर्म काउंट ड्रॉप कर रहा है एंड जैसे ही हम लोग उनको बताते हैं कि आप मोबाइल फोन अपने ट्राउजर्स की पॉकेट से रिमूव करिए, रात में सोते टाइम अपने कमरे से बाहर रखिए, इट इज नॉट अर्जेंट एंड मिनिमल यूज करिए, तो आपके हम लोग जब उनको कुछ महीनों के बाद एनालाइज करते हैं, देयर इज डेफिनेटली ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी। एंड पीसीओ की आपने बात की, पीसीओ केसेस के आजकल 30% लड़कियों को पीसीओडी होता है। तो अभी राइट नाउ इसकी प्रूवन स्टडीज नहीं है कि मोबाइल फोन के यूज से होता है, बट आई वुडंट बी सरप्राइज्ड अगर आफ्टर 10 years somebody tells me it was because of mobile phone. I started believing in this when I actually started seeing patients. Right. Keeping all the literature aside, first-hand information with people in front actually suffering was the clue to going to them. Yesterday I had a boy who came, then we did his MRI scan. He felt something is abnormal after using the phone for long periods. In fact, I'll tell you, last week I can tell you with specificity. There is one minister in Maharashtra. His PA had come. And he told me that whole day he's on the phone. Correct. Whole day. Because he said all my work is on the phone. Correct. Whole day I'm on the phone. And both sides, now he finds his hearing down. So we got his audiogram done. This was last week. And his hearing is down around 40%. So I have told him to use the landline as far as possible. And started him on steroids straight away. I mean, there was no other option left. Classical example is that people using it on one side are getting it.
Then they switch over to the other side and they get the same symptom on the other side. So the Gujarati gentleman was there who came and he was using it on one side and his hearing went down. Then he started using it on the other ear. And when the other ear he started developing tinnitus and then all symptoms. He came. So I said, when one side you had a problem, Why did you stop? Why did you use it on the other side? The answer was, "Hamare paas unlimited talk time." How are the tumors caused because of this here? Actually, one of these Australian reports are there that acoustic neuroma, the incidence is 50% higher in those who are using cell phones for a longer period. And these acoustic neuromas are actually from the auditory nerve, which is the 8th nerve, and the covering of the nerve. When they get stimulated repeatedly, probably because of the heat itself, they lead to these tumors, which are called as acoustic neuromas. So this heat could be a precursor to an abnormal growth, which we call a cancer or a tumor. Yeah, exactly. Pick up an organ system and dysfunctions. Think of the eye pains, blurring of vision, not being able to see in the night. Ear pains, difficulty of hearing, ringing in the ears, inequality of hearing on both the sides, not being able to understand the direction of sound, inability to sleep properly, easy fatigability, memory disturbances. You talk about whatever you want. These are 3 pictures which have been taken from 3 different studies. Now they look like Halley's comets. But if we look at any of these pictures, the first one is the DNA staining, which is unexposed to anything. It is completely healthy. The second one in each picture is after exposure to X-rays or the gamma radiations, where you actually see the broken tails where the DNA is fragmented. The last picture is somewhere simple cell phone radiation exposure for 22 hours to 24 hours have produced a similar change, which shows the DNA is breaking. This is one more experiment which was carried out in Russia. They worked on rats. They sacrificed normal rats and studied the brain. They exposed the rats to radiation for X duration at various intervals, and they studied the brain again. And the multiple circles which you see in the lower brain are the actual leakage sites where the radiation had damaged the blood-brain barrier in the rat brain. Start with Rajan Matthews. You represent the Cellular Operators Association of India. And the last time I had you on this show many years ago, I asked you, if you lived in a house and there was a cell phone tower opposite you at a height, would you be scared? Absolutely not. I, in fact, have a cell tower not too far away. How far? How far? Probably half a kilometer away from where I am. I have. That's not the same thing as looking out of your window and Dr. Martin, would you live near a tower? No, just a minute. I would never should have preferred staying away. All right, Mr. Munshi, do you have any comments about the videos that we just played? Slides. Here is Henry Lai slide. Now, if you will see, this is the same slide which Dr. Ashish Mehta had shown, that the first slide, second slide, and the third slide. First slide was unexposed control, bundle of DNA. Then the second one was calibration, and DNA breaks are very obvious. The third one is cell phone and microwave exposure for 2 hours at 2.45 gigahertz, searching so-called safe SAR levels. So single and double strand breaks observed in DNA from microwave exposure at levels below the current FCC exposure standard. The current FCC exposure standard is also not correct. It is extremely high, and it is a copy-paste of ICNR done without any thinking. We will come to that later. Because when damage to DNA is greater than the rate of DNA repair, there is possibility of retaining mutations and initiating cancer. And here's a slide about how the different mechanisms and ways through which EMFs harm the health. So do you want to shed some light on this, Mr. Munshi? Well, a mobile phone affects the whole body. It does not affect only my ear. It affects my ear, brain, it affects the heart, it affects the nerves, it affects everything. If anybody wants to have a detailed slide, I can send it to them. They have to just send an email. Next. So what are the various frequencies
These are like obvious We next come that, to the that citizenship. manuals of iPhone and BlackBerry. Next slide. You see, iPhone 6 manual says, when you perform repetitive activities such as typing or playing games on iPhone, you may experience occasional discomfort in your hands, arms, wrists, shoulders, neck, or other parts of your body. If you experience discomfort, stop using the iPhone and consult a physician. What does the BlackBerry and iPhone manual says, which nobody must have read? On your phone, you can read it. BlackBerry says, maintain a distance of 0.50 inches, 15 millimeter between your smartphone and your body while the smartphone is transmitting. iPhone says, keep your iPhone 10 millimeter or more away from your body to ensure exposure levels remain at or below the maximum level. Since we discovered this on their phones, they've gradually started reducing the distance from their body from say 25 millimeter now even down to 5 millimeter. On what basis? God knows. There is no scientific study done by them. They are only trying to sell this technology and sell the phones. Next, please. Now, we come to a very important point where insurance companies are not insuring the diseases caused by EMF radiation. We have here their policies. We have here all that they say in that, and they have classified EMF radiation as an air pollutant. I will. आपका ये जो Can you make it full screen? रेडियो वेव्स के आधार पर चलता है. आपको लगता होगा आपका सेल फोन जब ऐसे ही पड़ा है, जब आप फोन नहीं कर रहे हैं तो ये काम नहीं कर रहा है. नहीं, ये हर 30-40 सेकंड में एक बार एक रेडियो वेव भेजता है हवा में एंटेना की तरफ. So constantly your phone is working. It is beaming radio waves. इधर आपके सेल फोन से या आपके सेल फोन एंटेना के पास या करीब रहने से ओवर लॉन्ग टर्म आपकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता है. So just a few do's and don'ts, simple lifestyle changes. आप इस एक्सपोजर को आप रिड्यूस कर सकते हैं. So please adopt this. तो क्या आपको आदत है अपना सेल फोन ऑन रखकर अपने सिरहाने पे रखकर सो जाने की? ये बिल्कुल ही गलत आदत है. इसी वक्त तोड़ दीजिए इसे. जब आप सोते हैं आप अपना फोन दूर रखिए, चार्जिंग पे दूर रखिए, और अगर आपको अलार्म लगाना है फोन पर तो फोन को एयरप्लेन मोड पे रखिए और फिर इट्स ओके टू हैव इट बाय योर साइड. क्या आपको आदत है अपना फोन यहाँ पर अपने दिल के करीब या अपने पॉकेट में यहाँ पर रखकर पूरे दिन घूमने की? ये बहुत गलत आदत है. इसे प्लीज अपने शरीर पर लगाकर मत घूमिए. यू कैन पुट इट इन अ बैग, या जब आप काम कर रहे हैं तो आप अपने पास एक थोड़ी सी दूरी पर टेबल पर रख लीजिए. बट डू नॉट मूव अराउंड द होल डे विद योर फोन इन योर पॉकेट. ब्लैकबेरी मैनुअल, आईफोन मैनुअल में भी लिखा है कि अपने शरीर और फोन के बीच में अंतर 5/8 इंच जरूर रखिए. इसका ये भी मतलब है कि हम जो ये फोन चिपका कर अपने कान पर लंबी लंबी बातें करते हैं, ये भी गलत है. द सेल फोन कंपनीज खुद आपको बता रही हैं कि कीप अ डिस्टेंस ऑफ 5/8 इंच या 15 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर अपना फोन रखिएगा. अक्सर हम फोन कॉल्स अपनी गाड़ी से करते हैं कि चलो हम बैठे हैं तो ये वक्त हम अपना इस्तेमाल कर लें, और सेल फोन पर फोन करते रहते हैं. ये भी गलत बात है. जब आप गाड़ी में होते हैं, जब आप ट्रेन में होते हैं, जब आप एलिवेटर में होते हैं, तो ये जो एलिवेटर है या ट्रेन है, ये जो मेटल की शीट है जो आपके इर्द गिर्द है, इट एक्ट्स लाइक अ माइक्रोवेव ओवन. तो ये जो रेडियो वेव्स है यहाँ पर टकरा कर वापस आती हैं, एंड दैट इंटेंसिफाइज रेडिएशन इनसाइड द एलिवेटर, इनसाइड द कार, इनसाइड द ट्रेन. क्या आपको महसूस होता है कि जब आप लंबी बात करते हैं सेल फोन पर तो आपके कान गर्म हो जाते हैं? इसका ये मतलब है कि ये जो रेडियो वेव्स आपके फोन से जा रही हैं, ये आपके कान के जो एरिया है, ये पूरा स्किन, ये सॉफ्ट टिश्यूज, ये उनको हीट कर रही है. इट्स लाइक अ माइक्रोवेव इफेक्ट. तो प्लीज कीप योर कॉल्स शॉर्ट. अगर आपको लंबी बात करनी है तो बेस्ट इज गेट अ वायर्ड हेडसेट लाइक दैट. ठीक है, ताकि आपका फोन आपसे थोड़ा दूर रहे और आप अपनी बात कर सके. वायर्ड हेडसेट, ब्लूटूथ नहीं. अगर आपके पास चॉइस है, लैंडलाइन है, तो सबसे बेस्ट आप अपना सेल फोन हटा दीजिए और लैंडलाइन से फोन करिए. अगर आप फोन ना करें और टेक्स्ट करें तो दैट विल बी इवन बेटर. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अपना फोन बच्चों को मत दीजिए, खेलने के लिए भी नहीं. बच्चे जो हैं उनकी ये जो हड्डी होती है ये बहुत ही पतली और नाजुक होती है. तो ये जो रेडियो वेव्स हैं जो सेल फोन के लिए इस्तेमाल होते हैं, they travel through your child's brain. So, since we are not sure of the long-term effects of EMF radiation, it is better to be safe than be sorry. So please अपने बच्चों को फोन मत दीजिए. जब आपके फोन पर सिग्नल वीक हो तो तब फोन का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि उस वक्त आपका फोन बहुत रेडिएट कर रहा है. उस वक्त वो रेडियो वेव्स जोरों से एंटेना को ढूंढ रही हैं, so that you get connectivity. ऐसे वक्त पर जबकि आपका सिग्नल लो है, आप अपने फोन को प्रेफरेबली इस्तेमाल मत कीजिए. So ये थे कुछ do's and don'ts. अपना लीजिए and reduce your exposure to radio wave activity from your cell phones. Do you have any comments?